So, good afternoon, everyone. Welcome, all of you. I hope voice is loud and clear. Can I get a quick confirmation from the participants if my voice is audible in the chat box? Perfect. Thank you. Thank you so much. What I'll do is I'll hit the recording button for this session as well. Recording in progress. Great. So, thank you, Aarti ma'am. Thank you, Bhagyashri ma'am, for the confirmation. Good afternoon and welcome all of you for today's session on digital resources, which our institution has subscribed to in accordance with MUHS. My name is Gaurav Date. I'm the training specialist with EBSCO Information Services, and I am associated with this company for last 5.5 years. At the onset, I would want to thank the management team of our institution, MUHS, for bringing such a resource to all of us. Every one of us can access these resources. In this session, we will go through the resources subscribed, what we can access it. And the next part, the second part, we will get to know how we can access it. What is the platform? Where do we have to go? And what are the features and functionalities? Now, for students who are pretty new, like first year, second year students, journals, magazines, or the literature which is published in it, it is written by the experts, doctors, scholars, and it will help you in your higher studies for your presentations, for projects, assignments, or for that matters, if you move ahead in research. Uh, these are the kind of platforms which you would need to search for the most authentic information written by the experts in the field, and it will really assist all of us. It also have access to many content which we are going to go through in coming slides. So once again, welcome all of you for this session on digital resources which our institution has. And these are the kind of content, literature which we can access. या प्लॅटफॉर्म मध्ये आपल्याकडे 3,400 पेक्षा जास्त फुल टेक्स्ट मेडिकल जर्नल्स आणि मॅगझिन्स आहेत, जे आपण ऍक्सेस करू शकतो. 5,000 पेक्षा जास्त ई बुक्स आहेत. डायनामिट नामक एक पॉइंट ऑफ केअर टूल आहे, विच इज अन एव्हिडन्स बेस्ड पॉइंट ऑफ केअर टूल विच वी कॅन ऍक्सेस. There are hundreds and thousands of images on various patient conditions, diseases, जे आपण स्मार्ट इमेज बेस द्वारे ऍक्सेस करू शकतो. आणि डिस्कवरी सर्व्हिस हा एक सिंगल विंडो प्लॅटफॉर्म आहे, ज्याच्या थ्रू आपण हे पूर्ण डेटाबेसेस ऍक्सेस करू शकतो. आणि रिमोट ऑथेंटिकेशन फॅसिलिटी प्रत्येकाला आपण दिलेली आहे, जेणेकरून कॉलेजच्या प्रिमायसेस मध्ये किंवा कॉलेजच्या बाहेरून सुद्धा आपण हे रिसोर्सेस ऍक्सेस करू शकतो. राईट. सो ह्या सगळ्या गोष्टी आपण येणाऱ्या काही स्लाइड्स मध्ये चेक करणार आहोत. सो मुव्हिंग अहेड क्विकली, ऑल्ट हेल्थ वॉच हा एक डेटाबेस आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला 180+ फुल टेक्स्ट इंटरनॅशनल, नॅशनल जर्नल्स, पीअर रिव्ह्यूड जर्नल्स जे आपण ऍक्सेस करू शकतो. या जर्नल्स मध्ये वेगवेगळ्या कॉम्प्लिमेंटरी थेरपीज, जसं की आयुर्वेदा आहे, अक्युपंक्चर आहे, नेचरोपॅथी आहे, या सगळ्याचा लिटरेचर आपल्याला ऍक्सेसिबल आहे. ह्याच्यासोबत ऑल्टरनेटिव्ह मेडिसिन मध्ये आपल्याला 116 फुल टेक्स्ट जर्नल्स आणि मॅगझिन्स, ज्यातले 63 आर विथ नो एम्बार्गो, आणि 26 such journals and magazines which are
इंडेक्स्ड इन स्कोपस अँड वेब ऑफ सायन्स प्लॅटफॉर्म्स असा कंटेंट आपण या प्लॅटफॉर्म मध्ये ऍक्सेस करू शकतो. नाव फॉर ऑल द मेडिकल इन्स्टिट्यूशन्स, सिन्हाल आणि पबमेड. सिन्हाल is basically for nursing. PubMed is for all the medical streams. So we use these kind of indexing platforms to search for the information. आणि आपला प्लॅटफॉर्म या दोन्ही ग्रेट इंडेक्सिंग प्लॅटफॉर्म्सना एक खूप चांगला कंपॅनियन म्हणून काम करतं, जेणेकरून अ, आपल्याकडे जे काही जर्नल्स आहेत ते सगळे पबमेड इंडेक्स्ड आहेत. सो इफ समवन इज युझिंग पबमेड अँड दे फाइंड की त्याच्यामध्ये फुल टेक्स्ट आर्टिकल नाहीये, दे कॅन कम ऑन आवर प्लॅटफॉर्म अँड सर्च फॉर इट. जर ते 3,000+ फुल टेक्स्ट जर्नल्स मध्ये तो जर्नल इंडेक्स्ड आहे, तर आपल्याकडे त्याचे फुल टेक्स्ट आर्टिकल मिळू शकतं. राईट. ह्याच्या व्यतिरिक्त बिईंग स्टुडंट ऑफ अलाइड हेल्थ सायन्सेस, आपल्याला इथे कोर मेडिकल जर्नल्स आणि मॅगझिन्स सुद्धा ऍक्सेसिबल आहेत, जसे की जामा. You can see Science, Annals of Internal Medicine. We have Intensive Care Medicine, European Heart Journal, Science Immunology, etc. आणि 500 पेक्षा जास्त रिनाउंड पब्लिशर्स सोसायटीजचा कंटेंट तुम्ही इथून ऍक्सेस करू शकता. पब्लिशर्स लाईक टेलर फ्रान्सिस, थेमे, स्प्रिंगर नेचर, वॉल्टर क्लुवर्स, सेज, ACP एक्सेट्रा, जे आपण ह्या प्लॅटफॉर्म थ्रू ऍक्सेस करू शकतो. सिमिलरली JAMA journals आहेत. You can access lots of JAMA journals like JAMA Psychiatry, Pediatrics, Ophthalmology, Neurology, Surgery, Core JAMA publication. हे सगळे जर्नल्स आपल्याला ऍक्सेसिबल दिलेले आहेत आणि आपण हे ऍक्सेस करू शकतो. अलॉंग विथ दॅट, ग्लोबल आणि नॅशनल क्वालिटी आयुर्वेदिक जर्नल्स, होमिओपॅथिक जर्नल्स, जे ऑल्टरनेटिव्ह मेडिसिनचा एक भाग आहेत, ते सुद्धा आपण ह्या प्लॅटफॉर्म थ्रू ऍक्सेस करू शकतो आणि त्याचीच ही काही नावं आहेत. सिमिलरली अदर मेडिकल जर्नल्स जसे की अमेरिकन फॅमिली फिजिशियन, ब्रिटिश जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, ब्रिटिश जर्नल ऑफ यूरोलॉजी, अँजिओलॉजी, एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन, हे सगळे जर्नल्स ग्लोबल मेडिकल इन्स्टिट्यूशन्स, ऑर्गनायझेशन्स, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स ग्लोबली हे ऍक्सेस करतात आणि MUHS थ्रू आपल्या इन्स्टिट्यूटला सुद्धा ह्या पद्धतीचा क्वालिटी कंटेंट जो ग्लोबल आहे, सगळ्या क्लिनिशियन्सना हेल्पफुल आहे, तो सुद्धा आपल्याला इथं ऍक्सेसिबल मिळालेला आहे. One question from Utkarsh: is there any kind of fees for this? The answer is no. आपल्या इन्स्टिट्यूटनी आणि MUHSनी ऑलरेडी ह्याचं सबस्क्रिप्शन पे केलेलं आहे आणि प्रत्येक स्टुडंटला, युजरला हा अवेलेबल आहे, फ्रीली ऍक्सेस करू शकता. त्याच्यासाठी तुम्हाला वेगळा कुठलाही चार्ज पे करायचा नाहीये. सो आय होप it's answered. A good question, Utkarsh, for clarifying your doubts. Thank you so much. Right. So let's move ahead. Moving ahead with few more journals and then ebooks. So आपल्याकडे टोटल 5,000 पेक्षा जास्त मेडिकल आणि नर्सिंग रिलेटेड ईबुक्स अवेलेबल आहेत, ज्याच्यामध्ये पेरेंट पब्लिशर्स लाईक एल्झेवियर, लिपिनकॉट विलियम्स, विल्किन्स एक्सेट्रा असे पब्लिशर्स आणि वेरियस ग्लोबल युनिव्हर्सिटीज लाईक केम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड ह्यांच्या ऑथर्सनी लिहिलेले ईबुक्स आपल्याला इथं अवेलेबल करून दिलेले आहेत, जे आपण ऍक्सेस करू शकतो आणि चॅप्टर वाईज डाउनलोड सुद्धा करू शकतो. Few ebooks like Oncology Massage, Alternative Medicine Research ebook, History of Alternative Test Methods in Toxicology, Alternative Therapies for Epilepsy, etc. अशा काही ईबुक्स आहेत, बऱ्याचशा ईबुक्स आहेत जे आपण यूज करू शकतो. These are good reference books, I'll tell you, which can be really helpful to all of you. Second question from Ganesh.
सब्सक्रिप्शन कितने दिन तक रहेगा, मींस कब तक हम ये एक्सेस कर सकते हैं? अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन. इट इज एन एनुअल सब्सक्रिप्शन. हर साल ये एमयूएचएस एंड हमारी इंस्टीट्यूशन गोइंग फॉरवर्ड वी विल थिंक अबाउट रिन्यूइंग इट, बट फॉर नाउ it is till March 30th, 2026. April to March हा calendar आहे. We can access these resources till uh, March 2026. Renewed, उसके बाद renew होने के बाद it will be continued. Right? So it's an annual subscription. हर साल renew होना करना होता है. Right? And that will be taken care by your institution and MUHS. Clear? Moving ahead quickly, after ebooks, we have an evidence-based point of care tool for students. Just for information purposes या आपको मेडिसिन ड्रग्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या अलग अलग मेडिकल कैलकुलेटर्स है दिए गए यहाँ पे. सो इफ यू वांट टू यूज दीज कैलकुलेटर्स, आपको अलग अलग डिजीज टाइप्स के बारे में लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करनी है इन अ डिजायर्ड फॉर्मेट, वो तो आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट? विच विल बी रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस. Third question, can we download the PDF of e-books? Yes, chapter-wise Sanskriti, you can download it, right? But full ebook download publishers allow नहीं करते हैं, जिसे हम cover to cover download कहते हैं. But chapter-wise अलग-अलग chapters आप बिल्कुल PDF फाइल में download कर सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो. Can we download the source in PDF form? Uh, Ganesh, can you elaborate your question more? What do you mean by source? Is it the bibliographic records you want, or what exactly as a source you want? Because articles, ebook के chapters आप regular PDF फाइल में डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो. Right? Okay, perfect. Right? Moving ahead, स्पेशलिटीज सब्जेक्ट्स जो कवर होते हैं डायनामिड ऐप में, यू कैन सी देयर आर 45 कोर स्पेशलिटीज और 375 मेडिकल सब्जेक्ट एरियाज होते हैं, एंड यू कैन सी वेरियस कोर स्पेशलिटीज अवेलेबल ओवर हियर. अलोंग विद दैट आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए इमेजेस एंड वीडियोस भी देख सकते हो. These are like core images, videos on various diseases. These are core images or videos on various patient conditions, right? Uh, just before our session, we had a session with our faculty members, research scholars also. वहां पर we searched, but we couldn't find any medicinal plant images kind of a thing. So it is like you can see core diseases and conditions and various other diseases over here. So you can see there are 3D images, videos, which you can look out for as well. Right? Similarly, ये content हम access कर सकते हैं, but how we can access it? एवरी यूजर, स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर जो हमारे इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, उन्हें ओपन एथेंस के जरिए एक ऐसा ईमेल आया होगा फ्रॉम नो रिप्लाई एट openathens.net. ये कुछ दिनों पहले भेजा गया था. आज सुबह भी दोबारा सारे यूजर्स को ये ईमेल भेजा गया है, जिसका सब्जेक्ट लाइन होगा वेलकम टू एमयूएचएस डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम, योर रिमोट एक्सेस क्रेडेंशियल्स. इन यूजर नेम पासवर्ड के जरिए आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो. आपका ईमेल आईडी आपका यूजर नेम है, पासवर्ड कैपिटल MUHS योर मोबाइल नंबर. सो दैट्स हाउ you can start accessing the resources, and the website is this, right? अगर ये ईमेल आपको इनबॉक्स में नहीं दिख रहा है, तो मेक श्योर यू चेक इट इन दिस स्पैम बॉक्स और द जंक बॉक्स, प्रोबेबली वो उसमें ऐड हुआ रहेगा, बट डू चेक इट. Once you check it, you can start accessing the resources instantly, right? Moving ahead, now ये सारे databases
अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो मिल रहे हैं वो सिर्फ एक सिंगल सर्च विंडो पे लिंक किए गए हैं, जिसको हम एब्सको डिस्कवरी सर्विस कहते हैं। सो दैट एज अ यूजर हम केवल एक ही विंडो का इस्तेमाल करें टू सर्च फॉर लिटरेचर, और आसान हो जाए हमारे यूजर्स के लिए जो लिटरेचर को सर्च कर रहे हैं। एंड दिस इज द वेबसाइट। So you can bookmark this website, that is library.muhs.in, right? और इस वेबसाइट के जरिए आप इन रिसोर्सेज को एक्सेस करना शुरू कर सकते हो। Now, how does this website? So if I click on the next window, this is the MUHS official web page, right? यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी, उसमें MUHS डिजिटल लाइब्रेरी, एंड दिस इज द लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी वेब पेज। यहाँ पर फैकल्टी वाइज आपको सब दिखेंगे। सो वी आर फ्रॉम आयुर्वेदा, वील चूज इट एंड वील स्टार्ट यूजिंग आवर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, राइट? अगर आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है तो इसी पेज पर एंड में हमने क्यूआर कोड्स दिए हुए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू इंस्टॉल द मोबाइल ऐप, सो दैट मोबाइल ऐप के जरिए भी आप इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। सो अभी जिन्होंने मोबाइल के जरिए ज्वाइन नहीं किया है, दे कैन स्टार्ट एक्सेसिंग द रिसोर्सेज ओवर द मोबाइल ऐप एज वेल। मोबाइल ऐप आपको एंड्रॉइड एंड iOS दोनों में मिलेगा। सो इफ यू आर यूजिंग एन आईफोन और एन एंड्रॉइड फोन, you can search for EBSCO Mobile or just scan the QR code, and it will redirect you to the Play Store or the App Store and install the app. Now we are going to move on to a live demonstration of the platform. So just give me a moment. So this is the MUHS web page, right? अगर आपको डायरेक्टली लाइब्रेरी सर्च करनी है, डिजिटल लाइब्रेरी, यू कैन गो टू गूगल, टाइप इन MUHS डिजिटल लाइब्रेरी, और वो हमें इस पेज पर ले जाएगा, विच इज MUHS डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शिया। सो दिस इज द MUHS डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शिया। यू कैन सी फैकल्टी वाइज लॉगिन। हर इंस्टीट्यूट का नाम अपने अपने फैकल्टी में दिया गया है। सो फॉर अस इट विल बी अंडर आयुर्वेदा। Then you can look out for various resources and databases जो आप यहाँ से search कर सकते हो। Smart images, videos for various disease conditions, you can find them. Then here is the mobile app. अगर मुझे journals, magazines, e-books access करने हैं तो मुझे EBSCO mobile app install करना है। And if I want to access the point of care tool, मुझे Dynamed app install करना है, right? So that's how this page is. Now let's go to Ayurveda. यहाँ पे आते ही I can search for my institute's name. So ours is at the top, right? बहुत सारे institutes अभी जुड़ रहे हैं इसमें, right? So you just need to choose your name, institute's name, and it will take you to the login page. For me, it is MUHS, so I'll select Maharashtra University of Health Sciences, और वो मुझे MUHS के लॉगिन पेज पर ले जाएगा, राइट? नाउ एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो भी फर्स्ट टाइम यूजर है और इस पेज पे जब हम यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे पहली बार एंड साइन इन पे क्लिक करेंगे, तो मुझे ऐसा एक पॉपअप पेज आएगा, डू मोर विथ योर रिसर्च। हेंस रिक्वेस्ट यू कि आप कंटिन्यू पर्सनलाइज्ड पे क्लिक करें एंड कंटिन्यू करें। स्किप फॉर नाउ प्लीज ना करें, बिकॉज विथ योर पर्सनल नंबर, with your personal email ID, it will create a personalized folder also on the platform. So the next step is continue personalized पे click करें, और ये केवल एक ही बार आएगा, right? So now I'll just type in my user credentials and I'll enter the password and I'll click on sign in. So my account is an administrator account. तो ये एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के लिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है, सो यू कैन जस्ट skip it.
I'll just enter this code and I'll sign in. So ये आप लोगों के लिए नहीं होगा, आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते ही you will be redirected to the home page. So this is the home page where we come. Right? Now you can see यहाँ पर केवल MUHS का लोगो दिखाई दे रहा है, बट आप लोगों के लिए MUHS के साथ you'll have your institution's logo reflecting as well. नेक्स्ट, अगर मैं माई एब्सको पे क्लिक करूं एंड मैंने वो पर्सनलाइज पे क्लिक किया हुआ है, तो मुझे मेरा यहाँ पर नाम दिखाई देगा. दिस कंफर्म्स दैट माई पर्सनल अकाउंट इज ऑल्सो लिंक्ड टू माई ओपन एथन्स अकाउंट. अब आते हैं हम इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे मैं सर्च करना शुरू कर सकता हूं आर्टिकल्स फ्रॉम जर्नल्स, मैगजीन्स, ई बुक्स एक्सेट्रा. ये एक बहुत ही बेसिक सर्च है जो हम कर सकते हैं यहाँ पे. So, for example, if I'm, let's say, looking out for articles related to a particular medicinal plant, let's say turmeric, yeah, I can say, I'll use the medical term of it, that is curcuma longa, which is called for turmeric, right? So you can see it's instantly brought me the topic. I can just search for it and it will start populating results for me. Right? And for research starters, you can see it's a beautiful research starter thing. Or for newcomers, young, जो मुझे basic जानकारी चाहिए किसी एक particular topic में, you can click on it. So turmeric as an alternative treatment, जिसमें I can just click on it and it will show me a detailed information about that particular medicinal plant over here. So you can see definition, principal proposed use, other proposed uses, overview. ये सारी basic चीजें आपको इस topic which is research starter में आपको मिल जाएगी जो आप देख सकते हो. Right? So if I just go back to the result page, now you can see turmeric, yeah, the medicinal term of it is bringing me 92,000 records, full text records. But अगर मुझे इसमें आयुर्वेदा के लिए search करना है, so what I can do is I'll just go to advanced search and दूसरा keyword मैं type करूँगा यहाँ पे आयुर्वेदा और फिर मैं search करूँगा. And now you can see it has brought me 6,000 records which are available, full text records for turmeric, and you can find them over here. So instead of Ayurveda, you might be looking out for a particular disease or a condition. You can search for that as well. I'll show it to you again. So let's take Ashwagandha, right? So for Ashwagandha, the medicinal name is Withania somnifera. So I'll just use that name over here, right? And I'll do a search for myself. So you can see it's brought me 6,000 or 17,000 full text records on this particular topic. So if I'm interested into a particular disease, right, I can try to look out for those diseases as well. Right? So that's how we can do a search, and make sure you use advanced search for that topic, right? And look out for different medicines or different, let's say, conditions, diseases. So for example, now I use psoriasis, which I demonstrated in my earlier session as well. So I'll choose psoriasis and I'll type in Ayurveda, right? And I'll do a search. So now it will bring me results from only fields section, remember. So fields क्या होता है, जब भी मैं कोई टॉपिक यहाँ पर एंटर करता हूँ, it searches only in the title, abstract, subject indexed keywords and populates results. So वो पूरे documents में search नहीं करता है. Just to show you an example, अगर मैं psoriasis and Ayurveda search करता हूँ, मुझे 1900 full text records मिलते हैं.
But then if I again go to advanced search and instead of all fields, I'll use the next option, that is all text. ये क्या करेगा? इन keywords को full text articles में search करेगा, right? And results populate karega. So it will expand my results, right? So I guess I've missed on clicking new search. So I'll just type can all text and Ayurveda. Again, I'll choose all text और यहाँ पर मैं search करूँगा. So it will expand my result page. I'm not sure why it is giving me the same results. Apologies. There might be some network issue. Ideally, it should expand our search. Right, I'm just trying it once again. Ideally, it should not. So I'll keep Boolean operator as and, because in my previous session, it did demonstrate, but right now it's giving me an same results. So let's see. I'm not sure why it is giving this weird results. Ideally, it should go beyond this, right? No worries, but let's take the same results over here, right? And you can see there are different articles on psoriasis due to Ayurveda treatment. So you can see there are case reports, case studies, which you can look out for. Clear? Now you can see you have top 10 results. You can extend it up to 50. You can have relevance or date newest results over here, right? Now, you can see it's brought me 1800 results. I'm not sure it's not refreshing or what is the issue. Earlier it showed 1900, now it is showing 1800. Strange, right? There might be some work happening at the backend, probably. That's the reason. But now, out of 1800, I might be interested, let's say, only into few articles. But how do I choose them? So you can see यहाँ पर all filters करके एक section है जहां पे आने के बाद आप अलग अलग फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो. लाइक अंडर पब्लिकेशन डेट आई कैन लुक आउट फॉर द पास्ट 12 मंथ रिकॉर्ड्स और मैं कस्टम भी कर सकता हूं कि लास्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के चाहिए. कंटेंट प्रोवाइडर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज दिखाई देंगे जो इस कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं. यू कैन फिल्टर इट विद दैट. Source type, again helpful. You want to look out for ebooks. There are 117 ebooks which has information on Ayurveda treatment of psoriasis. You can find them. Yeah, for academic journals, magazine articles, review articles, etc. Publishers कौन-कौन है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. Subject, you can find lots of subject over here. Like I'm interested into case studies या फिर case reports. So I can just type in case. You can see there are four case reports. Similarly, if I'm interested into systematic reviews, if there are any, so जैसे ही मैं systematic review type करूँगा, अगर होगा तो वो दिखाई देगा. या फिर clinical trials अगर कुछ है. So you can see there are 33 clinical trials available for this particular topic on Ayurveda treatment of psoriasis. You can find them over here under the subject tab and you can filter it easily, right? Then you have publications. कौन से journals है, magazines है जो मुझे सबसे ज़्यादा literature देते हैं. So are you an international quarterly journal of research in Ayurveda? We have yoga journal, journal of Ayurveda case reports, etc. Right? Language, geography, and major subject headings, self-explanatory. So you want to look out for more information on plant extracts, medicinal plants, कौन से इस्तेमाल होते हैं, etc. So you can make use of them over here. Dhananjay, I'm coming to your question. Just hold on. Right? Language, geography is self-explanatory. You can filter it with language. Most of them will be in English, right? So Dhananjay is asking a question, can we publish our own research papers on it? Well, Dhananjay, it is not a publication platform. You need to approach a publisher to get your articles published, right? So once you publish it with a publisher, and if that publisher is listed
on our platform, indexed on our platform, then your literature will be available on our platform. Right? So I hope I've answered your question. Now, moving on, once you select the filters, limiters, one important thing which जो मैं सबको recommend करूँगा वो है अगर आप इस टॉपिक में लेटेस्ट लिटरेचर पढ़ना चाहते हो, लेटेस्ट कंटेंट को फॉलो करना चाहते हो, instead of visiting this platform regularly, what you can do is create an alert for yourself. Click on create alert, right? So you can see the alert name. आपको description देना है, दे सकते हो. Frequency, there are 3 options. Monthly option आप choose कर सकते हो, so that every first week of the month, जब भी EBSCO आपका टॉपिक सर्च करेगा, पिछले 30 दिनों में कौन सा नया लिटरेचर उन टॉपिक्स में ऐड हुआ है उसे फिल्टर करेगा और उन आर्टिकल की लिंक्स आपको डायरेक्टली ईमेल करेगा आपके ईमेल एड्रेस पे. सो यू कैन जस्ट सी आई हैव क्लिक्ड ऑन क्रिएट अलर्ट एंड द अलर्ट हैज गॉट क्रिएटेड फॉर मी. मैं रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स जो न्यूएस्ट लिटरेचर को फॉलो करना चाहते हैं, गेट एन अलर्ट क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ओवर हियर. ये आपका बहुत सारा समय बचाएगा. Question from Ashlesha, can we access our second year syllabus books? Ashlesha, syllabus books आपको इस प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी. यहाँ पर जो ई बुक्स है वो most of them are reference books, right? Journals, magazines जो है वो आपको आज की डेट में आपके सब्जेक्ट में क्या नया रिसर्च हुआ है, क्या नया लिटरेचर पब्लिश हुआ है, वो बताएगा. सिमिलरली इज विद द ई बुक्स. ये जो बुक्स है वो बहुत ही गुड रेफरेंस बुक्स है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो. सिलेबस बुक्स, द आंसर इज मोस्टली नो, बिकॉज पब्लिशर्स ऐसे बुक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नहीं देते हैं. राइट? सो दैट्स हाउ वी कैन look out for ebooks, journals. Now, moving on, I have one more question. Can we download the PDFs? The answer is yes, we can download them. So you can see there are PDF full text options, and wherever there are multiple options like online full text and PDF. So all PDF files are downloadable. You can click on it and download them. One important thing जो extra है online full text में जो मैं share करना चाहूँगा वो है translation feature. You can translate articles into national and international languages. अगर आपको कोई आर्टिकल मिलता है जो किसी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज में है, जर्मन, फ्रेंच, उन्होंने आयुर्वेदा पर कुछ रिसर्च किया है, उन्होंने पब्लिश किया है, एंड इट इज देयर इन देयर लैंग्वेज, और आपके पास अगर HTML फॉर्मेट है तो यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश और यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू योर रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल, लाइक दिस. So you can see there is Marathi option also. आप इन आर्टिकल्स को मराठी, हिंदी या आपके लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके इन्हें पढ़ सकते हो. So now you can see it has translated it into Marathi and you can start going through it as well. Similarly, instead of reading it, अगर आपको listen करना है, सुनना है, you can listen to an English article from here as well. So you can see there is a listen feature. You can click on play and it will start reading out the article for you. Management of psoriasis with Ayurveda Panchakarma. Right? So that's how you can start listening to the articles as well. बाकी के tools जो यहाँ पर available है, you can find, I can print it. I can download a PDF file from here. I can share this article. अगर यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए हैं एंड दे फाइंड सम गुड आर्टिकल्स जो आपको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, रिक्वेस्ट कि आप डाउनलोड करके PDF फाइल ना शेयर करें, इंस्टेड आप उस आर्टिकल का लिंक क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली एंड शेयर दिस लिंक विद योर स्टूडेंट्स. दिस विल हेल्प अस कैप्चर द राइट यूसेज. बिकॉज कैसे होगा, अगर आप एक PDF फाइल डाउनलोड करो
और मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, सिस्टम में तो केवल वो वन डाउनलोड ही दिखाई देगा। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू शेयर दिस लिंक, जितने स्टूडेंट्स इस लिंक को क्लिक करके ये आर्टिकल एक्सेस करेंगे, उतना रिसोर्स का कंजम्पशन, सही डेटा हमें दिखाई देगा, right? So that will be again helpful for all of us during renewals. Then if you want to add this article to a folder, आप इस folder को create कर सकते हो. So you can see in my earlier session I had created a folder named Ayurveda और मैंने उसमें ये article add कर दिया. Now for students, research scholars, faculty members, जब भी आप कोई लिटरेचर को एक्सेस करते हो, यूज करते हो अपने प्रेजेंटेशंस में, प्रोजेक्ट्स में, रिसर्च में, आपको उसके साइटेशंस देने होते हैं. सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज द साइटेशन ऑप्शन, डबल इन्वर्टेड कॉमास, उस पर क्लिक कीजिए एंड देयर आर मल्टीपल साइटेशन फॉर्मेट्स, जिसमें से आप वैंकूवर स्टाइल फॉर्मेट चूज कीजिए एंड इसे कॉपी पेस्ट कीजिए. दैट्स इट. अगर यहां पर कोई बिब्लियोग्राफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, साइटेशन टूल इस्तेमाल कर रहा है, मेंडले, जोटेरो, एंड नोट वेब, नूडल टूल्स, आप साइटेशंस को उन टूल्स में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अंडर द एक्सपोर्ट साइटेशन ऑप्शन. गेटिंग इट? सो दीज आर द ऑप्शंस जो अवेलेबल है पीडीएफ फाइल्स के लिए या एचटीएमएल फाइल्स के लिए, दोनों के लिए, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो. राइट? सिमिलरली अगर ये टूल्स आपको मल्टीपल आर्टिकल्स के लिए चाहिए, आप रिजल्ट पेज पर आकर आर्टिकल्स चूज कीजिए और वही सारे टूल्स आप इंस्टेंटली यहां पर भी देख सकते हो. एडेड टूल यहां पर डाउनलोड का है. इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप आर्टिकल्स का मेटा डेटा डिजायर्ड फॉर्मेट्स में डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ, वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल में. सो फॉर एग्जाम्पल कोई रिसर्च स्कॉलर लिटरेचर रिव्यू कर रहा है और वो रिव्यू होने के बाद उसे अपने गाइड या रिव्यूअर को भेजना है कि दीज आर द आर्टिकल्स विच आई हैव रिव्यूड. इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द डिटेल्स मैन्युअली, जैसे कि टाइटल ऑफ द आर्टिकल, जर्नल नेम, ऑथर कौन थे, कब पब्लिश हुआ था, ये मैन्युअली ऐड करने की जगह आप यहां से डाउनलोड कीजिए एंड यू कैन शेयर दिस एक्सेल शीट विथ योर गाइड्स और रिव्यूअर्स, जिन्हें इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि ओके, आपने ये आर्टिकल्स रिव्यू किए हैं आपका लिटरेचर बनाने में. राइट? एंड यू कैन फाइंड देयर आर डायरेक्ट लिंक्स एज वेल. अगर आपके गाइड या रिव्यूअर को यह आर्टिकल चेक करना है तो दे कैन ऑल्सो गो थ्रू इट बाय यूजिंग दीज डायरेक्ट लिंक्स. तो ये टूल्स आपको होम पेज पे मिलेंगे जिसका आप बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो. Another question, can we access samhitas? The answer is no, because we have checked it in our previous session. Those samhitas जो publishers ने publish किया हुआ है वो available है government websites पे वगैरह. These are more related to medical subjects. Yes, samhitas are those books जिनका आयुर्वेदा में सबसे फोकस्ड अप्रोच है कि कैसे इस्तेमाल होना चाहिए. बट इस प्लेटफॉर्म पे उन संहिता का इस्तेमाल करके जो रिसर्चर्स ने आपके आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, राइट, वो आपको एक्सेस करने मिलेंगे. तो देयर आर नो संहितास बिकॉज वी हैव चेक्ड इट. राइट? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपको एमयूएचएस के पोर्टल पे मिलेगा. ये डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल है जिसमें आपको रिसोर्सेज एक्सेस करने को मिलेंगे. Right? So you can visit the MUHS portal if they have any what we call question papers uploaded on their website. You can access it from there. Right? There's another question. PubMed articles are also on Google. Is that any special article present on this EBSCO? Tanvi, a simple question. If I edit an article which is available on PubMed, right, and publish it on Google, can you give the authenticity of it? The answer is no. On EBSCO, the answer is yes, because we are giving citations to those articles also.
गूगल, ओपन सोर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स एआई का इस्तेमाल करते होंगे. सबसे बड़ा issue using open source and AI is the authenticity of the information. How will you authenticate it? Is my question. So I suppose you have got that answer because Google आपको citation नहीं देगा उस article का, but we on our platform are giving authentic citations of those articles, right? So that's the reason it is always suggested कि जब भी आप अपना एकेडमिक काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ऑथेंटिक सोर्सेस का इस्तेमाल करो. I hope, Tanvi, I have answered your question over there. Right? Moving ahead quickly. Now, where do I look out for journals or magazines which are available? The journals and magazines can be looked out in publication finder over here. So I'll just click on new search. I'll click on publication finder. यहाँ पे जाके आप सैकड़ों जर्नल्स को एक्सेस कर सकते हो, उनके इश्यूज, उनके वॉल्यूम्स को फाइंड कर सकते हो. यू कैन टाइप माय नेम. आप डेटाबेस वाइज सर्च कर सकते हो, आप सब्जेक्ट वाइज सर्च कर सकते हो. सो इफ यू गो टू सब्जेक्ट वाइज, यू कैन लुक आउट फॉर वेरियस मेडिकल सब्जेक्ट्स एंड सर्च फॉर इट, database wise as well, and publication wise. So for example, if I'm searching for publications related to Ayurveda, right, I'll just type in Ayurveda and it will provide me with various list of journals which are available over here, which I can access. So you can see Indian Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, right? So you can find it is available. It is a very recent publication and you can have them. So this is one more, Ayu, an international quarterly journal of research in Ayurveda, and it is available through Alt Health Watch 2010 से लेकर अभी तक. Since you can find various Ayurveda uh, details as well in these journals. International Journal of Cardiology, Heart and Vessels, which is focusing on Ayurveda. So you can see there is Ayurveda listed as well, right? So if I click on Alt Health Watch, it will take me to that particular publication, जहां से मैं सारे issues इस publication के access कर सकता हूं since 2010 till date, right? So once it opens up, I'll demonstrate it. Here it is. So you can see it is frequency 4, तो 2025 के issues update होना बाकी है. So once it gets updated, you can start accessing them as well from here. So that's how you can look out for various issues published for journals, magazines. And again, अगर आपको इन्हें follow करना है, you have 3 dots over here. Create an alert for a publication. So whenever a new issue of the publication gets added, EBSCO आपको notify करेगा आपके email पे कि ये नया issue add हुआ है इस publication का, and these are the links to the articles. Right? So this is how you can move ahead and search for journals as well. Now, looking out for ebooks. So let's say, let's look out for ebooks related to a particular medicinal plant. So let's say I'll take ashwagandha over here, right? So I'm typing in the medicinal name for ashwagandha. And over here under source type, it will show me if there are any ebooks. So you can see there are ebooks available. I'll choose it. And it will take me to those ebooks which are available over here for me. So you can see indigenous medicinal specialties, various ebooks which have reference of the medicinal Withania somnifera, the keyword what I've searched. I can access this ebook now from here. So if you want to search particular pages, you can do it on an ebook page over here. So you can see there are chapters. You can download them chapter wise from here. It is a full 304 page ebook which is available. So if I want to download chapter section number 1,
You can see it is of 12 pages. And from this ebook, at a time, I can download 100 pages maximum. So if I consume, अगर मैं 100 pages download कर लेता हूँ पूरे और मुझे और download करने हैं, just close this web page completely, open a new web page, open the same ebook, दोबारा आपको 100 pages download करने का मौका मिलेगा. So now I can download 12 pages from this chapter over here. And it will be a regular PDF file जो download हो जाएगा यहाँ पे. So you can see a PDF file has got downloaded. Now, the best part of downloading chapters from EBSCO platform is the footnotes at the bottom of each page. यहाँ पर वो हम बता देते हैं कि कहाँ से ये डाउनलोड हुआ है और कब हुआ है. ये आपको सेफगार्ड करेगा एनी कॉपीराइट इश्यूज में फ्यूचर में. सो यू कैन डाउनलोड एज मेनी पेजेस यू वांट फ्रॉम हियर. अगर आपको स्पेसिफिक टर्म सर्च करना है तो सर्च विद इन में जाइए और सेम कीवर्ड टाइप कीजिए एंड सर्च कीजिए. वो आपको सेक्शंस या पेजेस बताएगा जहां पर इसके बारे में जानकारी है. And you can just directly jump into that particular page and start going through that page over here. Right? So that's how you can search within the ebook. There are other options available जो journals के लिए भी थे. Download chapter wise, forward the link, citations अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसे cite भी कर सकते हो, etc. Right? So you can find them over here under the ebook tab. So this is how you can look out for ebooks and utilize them over here as well. Videos, yes, related to various diseases, various conditions of patients. You can find videos, you can find images, high definition 3D images. So let's go to that now. If I'm speaking about images. So now you can see on the left-hand side on the links, we have smart image base. Click on it. And it will take us to the image pages. Right? So click on Smart Image Base and start searching for various conditions, diseases over here. So let's say, for example, I'm looking out for paralysis. So I'll just type in paralysis and do a search over here. So it will bring me images, it will bring me videos related to paralysis, which I can look out for. So you can see Bell's palsy, facial drop. All these images are available. I can just click on it, right? It will open up the image for me over here. I can use these images in my presentations, in my research work. So you can download it from here. You can cite the images as well. So you can see this option is really helpful, which can help us cite images also, right? If you want to look out for videos, you can click on videos and start looking out for videos as well. So the video is on stroke over here. If I just click on it and click on play, it will start playing the video for me. The brain receives blood via two major pairs of vessels, the internal carotid and vertebral arteries. Right? So that's how you can download the videos, cite the videos as well. So that's how we can come down to the smart image base and start looking out for some good high quality images and videos. Coming down to the last part, that is Dynamed, the point of care tool for research scholars, faculties, as well as students if they want to get updated information in a proper format for diseases, conditions of patients, etc. You can come on Dynamed app and start searching. You can look out for various drugs as well. So we have drug information. We have specialty wise searches over here. We can look out for various drugs which have been put alphabetically over here, and you can just search for the drug information. So for example, if I just search for any of the drug over here, let's say alfuzosin,
I'll click on it and it will provide me with all the details, dosing for adult, pediatric, FDA labeled indications, etc. So all these details are made available to all of us over here. Similarly, interactions, if you're recommending a couple of drugs to a patient, you want to see if there might be interactions between those drugs. You can find them over here. Then we have calculators. You can look out for different calculators, medical calculators, clinical calculators, decision trees are available, and which can really help a clinician over here as well. So you can utilize them. Alcohol consumption screening audit questionnaire. So you can just click on it and you can see the questionnaires available. Right. So this can help us understand a condition or a patient better. Right now, if I click on specialties, it will give me those specialties which I can go through. If I want to search within, so let's say I'm interested into osteoarthritis, right? So, and I'm looking out for, let's say, Ayurveda, if any, and do a search. So I can't see anything related to Ayurved available. So let's look out for alternate medicine over here. So I can just type in alternate medicine and do a search. And here we are. You can say alternative therapies available for various osteoarthritis conditions. And you can find them over here. So you can just click on medications, non-operative, and you can find them listed over here. So for every condition, every disease, you'll have this format common. Overview and recommendations. You can look out for images as well. You can download these images. You can use these images as well. Right? So that's how we can look out for Dynamid. Utkarsh, no, you don't have to download any paper, right? Because it is provided to you in a very designed format, which you can go through over here. So for, let's say, osteoarthritis of the hands, I want to look out for quick evaluation and management of it. I'm looking out for history and physical. So I'm sitting in front of a patient and I want to just get quick details about some complications might appear. So you can find them, or I'm looking out for various guidelines provided globally. So I can look out for global guidelines, Asian guidelines, if any provided, and go through them as well. Right. So it's information about a condition, about a disease in a set order of format, which can help the clinicians to understand that topic quickly. Right. So that's how we can make use of the Dynamid app, which will be really helpful to all of us. Clear? So with that, I come down to the end of the session and open this platform for any kind of uh, questions, any kind of queries anybody has. I'll be really happy to answer them. Meanwhile, what we can do is you can look out how we can start using the mobile app. So once you install the mobile app, click on the green button which says access with your institution and search for your university's name. Remember, not your institute's name, university's name. Select it, click on continue, and it will take us to the same login page over here. Enter your own user credentials, and it will take you to the home page from where you can start searching for the topic of your interest areas. Mobile app is one of the most easy and a handy app. I would recommend you all to get it installed so that you can start using quality content, authentic content for your research, for your projects, for your academics. Right? With that, I come down to the end of the session and I open this question for a platform for any questions anybody has. Any of the respected faculty members, HODs who have joined in, any of the students, research scholars, if they have joined in, we would be really happy to answer all your questions.
Any questions, anybody? Okay, so if there are no questions, I would recommend you all start using it, and probably once you start using it, you might come across any questions. Please feel free to reach out to a library team or to a team for rest of Maharashtra who take care of MUHS. We would be really happy to assist you. Right? Uh, I take that there are no questions from the audience. Deepali ma'am, if you would want to share your thoughts before we end the session, anything if you want to share, please feel free to share. Okay, no worries. Great. Sure. So with this, let's conclude the session. I'll be sharing the recording link of the session to our library team, who in turn will forward it to you. You can keep it for your future references. Thank you so much, all of us who have joined in. Have a great day ahead. And with this, we announce the end of the session. Thank you so much and have a great day. Recording stopped.